So good afternoon all. Welcome to Commerce Gyanpit Odisha. So today we will start with the earlier class which we have already did in our yesterday's class, Payment of Gratuity Act 1972. So what we have understood in the nutshell, 5 things we need to remember. कौन Payment of Gratuity Act कौन, next वाला कौन, केबे स्टार्ट हिथिला, एम्प्लॉयर रिलेशन, थर्ड हला कौन, एडिशन, फोर्थ हला कौन, deduction, fourth हला appeal filing and others. Okay, these 5 things are very important. आमे को दिन से काली in our previous class हम सरेले gratuity कौन अछि, तापर हम कौन छिले एम्प्लॉयर रिलेशनशिप देखिले, तापर एडिशन देखिले, आ हमर फॉरफीचर देखिबार अछि. ठीक अछि, केमिति पेमेंट हो हम पूरा देखितले. आज कौन आम शिखा फॉरफीचर आ गवर्नमेंट रो अपील आ केन मिलु. ता अर्थ कौन, जेतळे गोटे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भितरे डिफरेंसेस रोची बा ग्रेच्युटी रिलेटेड. सपोज एम्प्लॉयर कहूची कि नाइ मते 5 लाख मिलियार अछि, एम्प्लॉय कहूची नाइ आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ दैट, मते केते मिलियार अछि, 6 लाख टा मिलियार अछि. कारण एम्प्लॉय जेबे कोन अधिका डिमांड करियो. ओके, सो सेतळे कैलकुलेशन रे कोनोसी प्रॉब्लम आछि किमा मिसगाइड होउछंती, सेठी तुम के हेल्प करियो तुमको. ठीक अछि, के हेल्प करियो तुमको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. के हेल्प करियो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. रिमेंबर अबाउट द फैक्टरीज एक्ट. फैक्टरीज एक्ट के करथिला, कंपिटेंट पर्सन जेमिति को हेल्प करथिला. एठी हमर के अछि, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके, चलो हला हम कोन सिखले पिलाने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट रे. इट इज ए ग्रेच्युटी, इट इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज gratuitous. Gratuitous means gratuity is paid as a gift from employer to employee at the time of termination of his service. Termination service रे दीटा आसीबो कोन, either with the help of retirement or on superannuation we can say. Termination or resignation of service. ता कोन कहैम, termination रे दीटा कोन, गोटेला resignation जे कि सो इच्छा रे पळेबो, आ ओड कहैम superannuation or retirement. ता अर्थ कोन, गोटे पर्टिकुलर एज गला परे कहारले फोर्स नथिले भी तुम ऑटोमेटिकली सेटे रिटायर्ड हो. रिटायरमेंट कोन अछि, तुम जदि आगु नोच सुपरनेशन ताको आबो रिटायरमेंट. तापर हम कोन देखले पिलाने, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट केबे स्टार्ट हेछि, 16 सितंबर 1972. सो ऑब्जेक्टिव कोन एटे, ऑब्जेक्टिव इज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज टू प्रोवाइड gratuity at the time of retirement or superannuation as a gift or as a service which he has rendered. Okay, तापर हम कोन सिखले पिलाने, सेम दिन सडे थिला कॉपी पेस्ट विथ 8 पावर विदाउट 8 पावर. ता अर्थ कोन, ग्रेच्युटी केबे एप्लीकेबल हो. कोन पिलाने, ग्रेच्युटी केबे एप्लीकेबल हो. ग्रेच्युटी केबे एप्लीकेबल हो, विथ 8 पावर केतरा को थियार अछि, 10 टा. विदाउट 8 पावर केते थियार अछि, 20 or more percent. 20 or more percent. Then important definition, appropriate government. Government के कई appropriate government, जेरे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट किमा स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट. And major ports, mines and railways, these are governed by central government. In any other case it is state government. Then employee कौन को पिलाने, employee लिखिए, employee other than apprentice. In the case of factories act, in the case of factories act कौन बुझतिला हमें, all are comes under workers definition. क्या आसला, worker definition. से तुम्हारा पार्ट टाइम आसु कि फुल टाइम आसु, कहीं ना सेटा हम कौन देवर से लेबर कौन अच्छी, इट लेबर जो लेबरियस काम करछंती, दैट मे बी इन द कंस्ट्रक्शन साइड और द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग साइड, जोटि डेंजर टिके थाउछ, तांगा लाइफ को रिस्क आस पारे. सेतपे सब एम्प्लॉय पाइन रे वी मस्ट एडहियर टू द सेफ्टी प्रिंसिपल. को तीनटा प्रिंसिपल थिला हमरो, कोन थिला मन अछि कार, गोटेला हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर. हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ए तीनटा प्रिंसिपल कार थिला फैक्टरीज एक्ट. ठीक अछि, एठी हमर कोन अछि, एम्प्लॉयर कौन अच्छी, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन आछि, अदर देन अप्रेंटिस को बा पार्ट टाइम जो माने काम करछन, जो माने कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, से माने को बोनस कोन से माने बोनस नै, एटा कोन कहबो हमरो ग्रेच्युटी अंडर रहबो ना. ठीक अछि, ओके, अंडरस्टूड. देन इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स या सब. ठीक अछि, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स कोन थिला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करथिला मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेएबल इन 2010, द अपर कैप ऊपर कैप. ठीक अछि, आगे जोटा 5 लाख थिला अब सेटा केते हिची, 10 लाख. केते हिची, 10 लाख. ओके, द ट्रांजिशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन वेयर द सीलिंग लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम आउट कोन हिची 7th पे कोन हिची 10 lakhs टू 20 lakhs हिची. केते हिची, 10 lakhs टू
20 lakhs. Instead of mentioning and specifying the ceiling amount, the amendment empowers the central government notifying the ceiling purpose for those limit can be revised from time to time with the age of wage and inflation and future pay commission. So तीनटा जिनस ऊपर काबर applicable होछ कोन कोन गोटेला wage गोटेला inflation गोटेला pay commission. ता अर्थ कोन पिलाने सपोज जनक सैलरी 10,000 अच्छे 20,000 हेला तार ग्रेचुइटी अमाउंट बढ़ी गला. Yes or no? Inflation means what in economical terms? Price increasing day by day. आज जोड़ा कौन जे आम आगे जो चॉकलेट किंतु कौन जो मु छोट पिला से 10 पैसा चॉकलेट मिलता तो स्कूल गला 25 पैसा है. नाउ डेज टंकाटे भी तुम भल चॉकलेट मिल भल चॉकलेट मिले 5 टका ऊपर जार अच्छे. तो अर्थ कौन इनफ्लेशन इनफ्लेशन कौन डे बाय डे जो प्रोडक्ट आज जो 5 टका था सेटा गोटे 5 वर्ष पर 50 टका कि 100 टका हो. दैट इज नोन एज इनफ्लेशन. जदि इनफ्लेशन होची हेले पे स्केल सेम रहे से रही पारिबो कि रही पारिबोनी सेतमे 7th पे कमिशन आस बा 8th पे कमिशन आस एमिति पे कमिशन आस जादर कोन अछि सब गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानंगु पैसा अधिक मिल. ओके अंडरस्टूड. नेक्स्ट एम्प्लॉयर. हु इज एम्प्लॉयर? In the terms of definition of employer in relation to any establishment of factory, oil field which belongs to central government or in the local authority will be termed as employer. Employer किए who provide service or goods to be manufactured by employee. Employee द्वारा जी सर्विस किंबा गुड्स क्या नाम दी प्रकार जिनस अछि कि नै रे हम इनकम करिया कोन अछि दी प्रकार हम जिनस कर पारे. गोटेला गुड्स जेडा कि हमर बिजनेस करछे और कोन गए सर्विस जेडा कि हम सर्विस करछे. एबे तुम टीचिंग नो छो ठीक अछि जो what are the amount you are paying for what? It is for this service which I am giving. Okay, I am not providing any goods. Goods means a tangible product. I am not providing any tangible product. किंतु हम दुकान को जाओ गो ड्रेस कि कौन जे फूड आर्टिकल्स किनुच तुम पैसा तुम कौन से सर्विस दौन से कौन दौर जो तुम होटेल को जाओ बड़ बड़ होटेल को जाओ सी तुम कौन दौर सर्विस दौर प्लस खावा को दौर ना गुड्स एंड सर्विसेस. से गवर्नमेंट नियम कौन कला जब तुम नॉर्मल रेस्टोरेंट को जाओ से तुमको कि सर्विस मिलूनी ठीक अच्छे. सर्विस इन द सेंस कौन तुम जो 5 स्टार होटेल को जीव तुम कौन सर्विस मिल तुम गाटा पाख लगू लगू किए गोटे आसिकी सर मैडम आप फोन धरी आप टोकन दिखाई आप गाटा सी जाए पार्क करदेव. दिज आर द सर्विसेज जिनस बुझ नॉर्मल रेस्टोरेंट रे सर्विस चार्ज के पकेबनी किंतु तुम जो थर्ड 3 स्टार या 4 स्टार होटेल को जीव ये सब सर्विसेज तुम मिल ठीक अच्छे. वेलकम करा गोटे सिक्यूरिटी गार्ड थी आसला तुमको हैंकेचिप कोड दिया हम ठीक अच्छे. दीज आर टाइप्स ऑफ तुमको कौन चेयरटा टे पछक आने तुम बसला आड़. सो दीज आर टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच दे प्रोवाइड. हाँ ना पढ़ी न पढ़ला कह ओके ठीक अच्छे. टी खाली पचार तुम क्या पचार सी तुमको हेल्प करेंगे. तुम गाटा खोलीदेवे गला आड़ू हैव ए गुड डे कौन गोटे गेस्चर करेंगे. सो दीज आर द सर्विसेज विच दे प्रोवाइड. दैट्स व्हाई गुड्स एंड सर्विसेज दीटा आमको एप्लिकेबल रोज कौन 3 स्टार 5 स्टार होटेल. चलो फैमिली. फैमिली कौन अच्छे पिलाने इन द केस ऑफ मेल किए आछी वाइफ पिला माने फादर मदर आउ जहाँ बाहर वाइफ रो फादर. सो दीज आर द पीपल हु कम्स अंडर द फैमिली. नेक्स्ट फीमेल रो कौन अच्छी फीमेल रो सेम हस्बैंड हैड चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड हैड डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रेसिडेंट सन ठीक अच्छे सब जगह आसवे. नेक्स्ट कौन कौन पिलाने वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो किए जी एडॉप्शन हो ठीक अच्छे कि स्टार्टिंग ना माँ बापा ना अनाथ आश्रम रे गोटे पिलाटे गड़ी गड़ी आस सी भी चाकरी कर सी चाहे बोले जो फैमिली कैटेगरी जो जन आसुना ना भी सी रखिदे पारे. जो सी मैरी हो बाहा होती फैमिली अंडर वाइफ पड़े आसे से जहाँ ना देते से गार्डियन कि कौन जे सी कौन मेन इंचार्ज थे ठीक अच्छे से अनाथ आश्रम ना जो देते से डिटेक्ट कराइज सागे सागे आंक नाटा न. ओके चलो नेक्स्ट रिटायरमेंट. रिटायरमेंट कौन कह एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज अदरवाइज ऑन द सुपरनेशन. सुपरनेशन कौन गोटे अटेनमेंट ऑफ एन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस गोटे कंडीशन जोटि कि तुम फुलफिल कर दौ ठीक अच्छे. से कौन कौन तुम कंट्राक्ट किंबा तुम कंडीशन ऑफ सर्विस अर्थ कौन केते कौन था कंट्राक्ट था ठीक अच्छे. जदि आम गोटे फ्यूचर गोटे रेवेन्यू इंस्पेक्टर हम ठीक अच्छे रेवेन्यू इंस्पेक्टर आम 58 इयर्स पर्यटन आम काम करार अच्छे. आर्मी रे जो तुम जॉइन कर 45 इयर्स तुम चाहिए रिटायरमेंट नहीं
कहीं 45 वर्ष पर्यंत ना सर्व करेंगे तापर कौन अच्छी आ सर्व करेंगे ना कहीं आर्मी कौन अच्छी फिजिकल यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रेंथ एंड एंडुरेंस तुम रहार अच्छे आ 45 वर्ष पर तुम से रही ठीक अच्छे जहाँ जी कंट्राक्ट लिमिट था जहाँ जी सर्विस पीरियड था अनुसार जॉब दिया ओके नेक्स्ट वेजेस वेजेस कौन आस पे बेसिक प्लस डीए को जिनस आसबनी बोनस आसबनी कमिशन आसबनी हाउस रेंट अलाउंस आसबनी टाइम वेजेस एनी अदर अलाउंसेस will not come under the definition of wages okay wages definition कौन आसीबो गोटे बेसिक प्लस डीए नेक्स्ट कंटिन्यूअस सर्विस एटा तुम काली कहितली कंटिन्यूअस सर्विस रे कौन आसी तमरो ए जो चारटा पॉइंट कौन आसी गोटे ले ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट रे एडे एम्प्लॉयर किछि फॉल्ट नहीं सेते पहले सी जदि न आसचंदेले भी ता कोन नि हबो कंटिन्यूअस सर्विस रे नि हबो नेक्स्ट टाइम कोन करे सीजनल बिजनेस 6 मंथ्स हो रबर टी एंड कॉफी ए तीनटा बिजनेस जतल करछोंदी सेतल 6 मंथ्स टाको 1 ईयर कैलकुलेट कराबो केते दिन कैलकुलेट कराबो 1 ईयर तापर माइन ऑन ग्लोव्स रे 192 डेज एंड अदर केस रे 240 डेज इट शुड बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट disablement means such disablement or incapabilities of an employee for the work he is incapable of performing एटा तो मोड एग्जांपल टा कहितली मु सपोज जने बरहमपुर भुवनेश्वर गोटे अकाउंटेंट जाउछंती आ तांकर भाग्यवश एक्सीडेंट हेला देन व्हाट विल हैपन दीटा लाइक सपोज भांगी गला हला ठीक अछि हेले कोन हमको तुम कहितली एटी कोन हो तांकर जहां से परफॉर्म करथिले अर्ली एबेले से परफॉर्म कर पारि ठीक अछि ता सर्विस रे किछि प्रॉब्लम हबो नाही कि से जो वर्कर था हे था कहीं दे वांट फिजिकल लेबर ठीक अच्छे नेक्स्ट एग्जाम्पशन को केस रे डिसेबल्ड को एग्जाम्पशन दे परियो विद द हेल्प ऑफ कौन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट नोटिस फॉर ओपनिंग पे कौन अच्छे पिलाने फॉर्म ए चेंज पे फॉर्म बी क्लोजर पे फॉर्म सी मन रहा ए बी सी These three forms are used for any establishment, opening, change or closure of an establishment from gratuity side. Okay, Gratuity Act 1972. कहीं गेटा करा होची जदर कोन अछि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो मिल जिवो जादर कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक अछि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैन टेक ए डिसीजन ऑन टू इट ठीक अछि नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ नोटिस तुम नोटिस गोटे देवा पड़ो ये तीन टा जिन देख ओपनिंग हो कि चेंज हो कि क्लोजर हो तुम नोटिस देवा पड़ो ठीक अच्छे नोटिस देवा पड़ो कहीं नोटिस देवा पड़ो कि डिस्क्राइबिंग दैट आमर चेंज होउची कि आमर ओपन आउट नुआ एस्टाब्लिशमेंट होउची किंबा क्लोजर होउची सो दैट एम्प्लॉय तांकर पैसा चाहिए ग्रेचुटी पैसा काट दे पारंती किंबा विड्रॉ कौन जे हम कौन जे ट्रांसफर कर पारंती ए सब दिन ताके यूज कर पारंती ओके नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी Payment of gratuity केवे applicable होबो फर्स्ट कंडीशन इज he should complete how many years of service 5 years of service exemption को केस रे एक्सीडेंट किंबा डिसेबलमेंट केस रे एक्सीडेंट किंबा डिसेबलमेंट केस रे ही तमर 5 years ता कैलकुलेट होबो नै से यदि 1 year सेडा कहलना तुमको एक्सीडेंट हेते कोन डेथ ता कहबो ना अच्छा सेमिति कहू छी कि हो ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज ओके ठीक अछि सो तमर डेथ हो कि डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज हो से केस रे एटा कोन अछि एक्सेप्शन अछि ए 5 वर्ष ओके नेक्स्ट on completion of continuous service of 5 years it shall be necessary whether the termination of his due to death or disability in case of death of the employee the gratuity payable shall be paid to his nominee को section 6 Section 6 of the Gratuity Act 1972 states that nomination. Okay, nomination केतरा फॉर्म होबो दीडा फॉर्म दीडा ठीक अछि दीडा तीनडा होबो दीडा ओके गोटेला गवर्नमेंट को गोटेला एम्प्लॉयर पाखु ठीक अछि नेक्स्ट देखो Forfeiture of gratuity. Section 4(6) provides that notwithstanding anything containing subsection, the gratuity of an employee whose service has been willfully omission or negligence. जदि negligence निजे जो होइतो deduction टा very important देखो जदि कोन जे willfully जदि जण जदि करूची
हेले ता कोन को फॉरफिचर ग्रेचुटी डिडक्ट करके दिया हो ओके राइट टू यूज वॉलंटरी एक्ट कोन वायलेंट एक्ट जदी करछोंदी देन आल्सो वी मे डिडक्ट द ग्रेचुटी okay deduct the gratuity. Next, if the service of such employee has been terminated for any act which constitutes offensive resulting from moral turpitude or providing such offense is committed in the course of employment, then also it will be counted for deduction. Next, amount of gratuity payable. Amount of gratuity payable केमती calculation होबो month रो केमती केते रो calculation होबो 26 days केते calculate होबो 26 days हेले कोन होबो हमरा लास्ट वेज सैलरी ओके लास्ट वेज सैलरी कोन कोन होबो रे लास्ट वेज सैलरी ले को दिन से कैलकुलेट होबो डेढ़ दिन से बेसिक प्लस डीए into 15/26 into completed year of service. Completed years of service 9 वर्ष 7 मास हेले केते दिन कैलकुलेट होबो 10 वर्ष ठीक अछि 6 वर्ष 3 मास हेले केते कैलकुलेट होबो 6 सो आंकर कोन जे ब्लू लाइन एरिया टा कोन 6 months एबो हेले कोन हिजबो सेटा होल ईयर नेक्स्ट ईयर हिज ओके अंडरस्टूड नेक्स्ट nomination section number kete nomination section number 6 so nomination section provides section 6 provides filing of nomination for receiving after the death of the employee the following points are to be noted in respect of nomination each employee who have completed 1 year of service kedine dire mon rakta eta asibo mcq re kete din itere tumka kariya achi 1 year of service 1 year of services who has completed 1 year of service shall make nomination in form F कहीं ताकू मिलिबो जे जार डेथ हिजबो ताकू मिलि देख आउट कंडीशन कोन अछि सपोज यदि ठीक अछि 6 मास जति कंप्लीट करछि कि 8 मास कंप्लीट करछि तो काई नॉमिनेशन जाउनी काई से एप्लीकेबल ही नाही ठीक अछि 1 ईयर कंप्लीटेड हेले ही एप्लीकेबल हो एम आई कहीं ना जो ब्लू लाइन कौन अच्छे 6 months अच्छी सी कौन कह सर 6 months तो 1 year कैलकुलेट हो ना फर्स्ट तो मैं एप्लीकेबल ही ना हाउ यू विल गेट इट अंडरस्टूड से लॉटा गोटे कौन से केतरा लॉयर गोटे केस 5,000 टका नौ गोटे केस 5 लाख टका ने आ गोटे केस 5 कोटी टका गोटे केस 5 कोटी टका नौ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जजेस गोटे केस 5 कोटी ने सेमती क्रिमिनल ऑफेंस थी ठीक अच्छे एमएलए एमपी मानकर ठीक अच्छे बा सेलिब्रिटीज मानकर केस जाते से केसेस ना बेसी ओके कहीं देख से पर्टिकुलर डे र कथा ना ता आगर जो मासे 2 मास से कष्ट पड़ो तार भी खर्च अच्छी ना इट इज नॉट एवं कस्ट मैनेजमेंट कौन गोटे दिन रही लगे वर्ष वर्ष आम से पाठ पढ़ते दिन दिन पाठ पढ़ी 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 एक्यूमुलेट हो गोटे दिन एग्जाम देकर हम पास हाँ से गोटे दिन कौन परिश्रम कि पूरा वर्ष सारा परिश्रम जमी सेमती गोटे केसटा को सल्व करने आगुरी आमको टाइमिंग देवा पड़े दैट्स व्हाई दे चार्ज दिस मच कहीं तुम नॉलेज से केस स्टडीज तुम करा पड़े ओके नेक्स्ट एटा फाइल को फॉर्म रे फाइल करेंगे एफ he may distribute the amount of payable by him under this act by more than one nominee le kono in case of a family कोन अछि पेरेंट्स किमा तमर वाइफ तार सन ए समस्त से परसेंटेज वाइज एलोकेट कर पारन ग्रेचुटी का ओके नेक्स्ट इफ ही इज नॉट ए फैमिली ता कोन कहबो वॉइड कराइजो कोन कराइजो वॉइड कराइजो if at the time of making a nomination the employee has no family nomination should be filed any person एडा को केस रे अनाथ आश्रम केस रे ओके अनाथ आश्रम केस रे जो तमर फैमिली नथियो का ना दी तमे जे तुम कोन जे बड़ गड थिबो ठीक अछि से पर्सन ना तुम दे पारियो ओके नेक्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी अमाउंट डिटरमिनेशन करिया पहिले तुमको ठीक अछि वंस डिटरमाइन हला पर तुमको 30 दिन इतर तुमको दे दाव पड़िबो जदी न दउछन के दिन दा पड़ियो 10% के पड़ो 10% मन रखता है ओके आगु आसो 10% तुमको कौन पड़ो रेट ऑफ इंटरेस्ट देवा पड़ो नेक्स्ट इफ द क्लेम ऑफ द ग्रेचुटी इज नॉट फाउंड एडमिसिबल इश्यू ए नोटिस इन द फॉर्म ऑफ एम टू द एप्लीकेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉमिनी ऑफ लीगल एक्ट
for specified the reason of gratuity is not considered admissible ठीक अछि जदि ग्रेचुटी जदि मिलुनी ठीक अछि जानार अछि तमे चाहे गोटे फॉर्म एम रे तमे फाइल आउथर कर परिबो नेक्स्ट जदि कोन से डिस्प्यूट आछे एटा फोर्थ नंबर टा ठीक अछि डिस्प्यूट जदि आछी फिफ्थ फोर्थ ना फिफ्थ एटा फिफ्थ रे आसो काई हमें अप्रूव कोन कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जीवा पड़ो ओके डिस्प्यूट हैला डिस्प्यूट केबे हैला कोन नाम करिया पड़ो then the controlling authority shall pay the amount of deposit the application where he is employee and the applicant is not an employee the nomination of his heir for the employee if the controlling authority is satisfied that there is no dispute in the right of application receiving the gratuity ठीक अछि so तमरा का पाखरे पावर अछि कंट्रोलिंग अथॉरिटी पाखरे काम अछि सी ताइले ता आंसर तुमको दबो एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी के दिन दे दबार अछि 30 डेज एतर दबार अछि ज तुम मिलुनी ठीक अछि 30 डेज भीतर जेतल तुम भाबुछ कि मु एलिजिबल हे गरनी ठीक अछि काई हमें जदी अप्लाई करबानी से दबो केमती हो कि नै एबे जेमिति कि एक्सीडेंटल केसेस जागो रिटायरमेंट और सुपरिन्यूएशन यू कैन प्लान बट एक्सीडेंट और डिसेबलमेंट यू कैन नॉट प्लान कि जानि सुनि कोन एक्सीडेंट करियो डिसेबलमेंट ठीक अछि बट डेथ आसी so it is unnatural so in that case you need to apply gratuity application note dabar achi okay next belated le kon jo 30 days or 60 days period of time thibo सेठी जब न करछ belated return कर पारे किंतु belated करिया पई स्पेसिफिक कोन थियार अछि रीजन थिबार अछि कि मो एटा काहे कि दे पालेनी next notice for payment of gratuity so if the claim is found to be admissible on the verification issue a notice in form L the application or the application employee or the legal heir in case of a specific gratuity amount be fixing a date not later than 13th date and the date of receipt of application for payment thereof से अर्थ कोन होची जेतले से नोटिस मिली वाला 13th डेट भितर ताकू मिल जिवार अछि रिसीट कि मिल जिवो ठीक अछि आंगर प्रोसेस केमिति हुए फर्स्ट ग्रेचुटी हम अप्लाई करलो तापर एतिके तुम डिटरमाइन होछ तामर तुम गोटे स्पेसिफिक टाइम दिया से टाइम पीरियड भितर तुम चाहिए कौन कर परियो डिस्प्यूट रेज कर परियो ता अर्थ देख रे मु अप्लाई करली 10 लाख ना मते ग्रेचुटी मिल गल सपोज सते मसे मते 10 लाख 50 देबो कहउछ मु खुशी ठीक अछि मु आराम से मुसेटा एक्सेप्ट कर 13 पर मु किछ कहले मते रिसीट पळे आसला कि नाइ सर आपन को मिलिबो 8 लाख 35,000 मोर केते मु भाबी दिले कैलकुलेशन रे 10 लाख सो एते कम मिलुची मो 13th डे भितरे मते डिस्प्यूट ऑर्डर रेज करदार अछि नॉन ऑर्डर पास हे जिवो वंस ऑर्डर पास हे गेले तुम कोन हो जिवो तुम पेमेंट तुम बैंक अकाउंट क्रेडिट हे सेते बे टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट काई ग्रेचुटी सर ग्रेचुटी कोन मिलला आडको वर्ष लागि अछि काहे कि लागो जिंसडा बचो बहुत दिन से इधर रोज पर्टिकुलर लोको को आजिकली कोन जे आधार कार्ड आसला री बैंक अकाउंट पळे आसला री सेते बहुत स्पीडली ही होछि किन आगे ये सब प्रॉब्लम जाय बार कान राम ले गोटे गां रा के 50 टा राम थिबे हो कि नै ठीक अछि आ सब्सिक्वेंटली इमीडिएटली केसेस मिलछि बापा नाले सेम थौछ ओके हे पर ना आगे कोन राम श्याम गीता ए सुजा नेम सेम या थिला ठीक अछि सरनेम जा जिम सिंद्रयो इमीडिएटली कोते केस आछि जिनकी फादर नेम अता ने सेम थौछ से पे आधार कार्ड इंट्रोड्यूस होला कान आधार कार्ड ओडे यूनिक नंबर ठीक अछि जादर कि सेडरो आइडेंटिफाई छै से पे सेडा को सीडिंग बेनिफिट करा हला जादर कि किछि एसो प्रॉब्लम हबो नाही ओके नेक्स्ट mode of payment section 9 provides that gratuity may be payable under and shall be paid in cash or if desired the payee in the demand draft or bank check eligible for employee nominee or legal heir तो अर्थ कोन मोड ऑफ पेमेंट कैश रे ही परिबो डिमांड ड्राफ्ट रे किमा बैंक चेक रे किमा एलिजिबल का दिया हबो एलिजिबल एम्प्लॉय को किमा नॉमिनी के बा लीगल है ओके नेक्स्ट एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन कोन कहा को दिया हबो किमिति करा हबो देखो रूल 10 प्रोवाइड दैट if the employee refuses to accept the nomination to entertain application for gratuity or reject the eligibility of gratuity or indicate less amount than eligible amount आम केस रे जो मु तुम कोन कहली सी केते भाबुतला 10 लाख टा आसीबो ताकू केते कराला 8 लाख कराला 30,000 पूरा 35 ठीक 35,000 okay and
falls to issue notice, the eligible person to receive the gratuity may file the कौन फाइल करिवो application रो फाइल करिवो within को date इतरे 90 days of date of occurrence of the cause, and the controlling authority for the issue direction to the employer. Additional copies along with the sent to the application for the purpose of issuing same with the opposite party. ठीक अछि opposite party कौन करियार अछि he should reciprocate कि काहे कि कम दिया हेछि किबा कोन प्रॉब्लम अछि तार रिजल्व करा जाय एडा कोन को अछि application for direction ताप कोन करा हबो if the said application is filed within the limitation period of 90 days, the controlling authority may admit the application if the application shows sufficient cause for delay of filing of application. The said application may be submitted to controlling authority in person. It may be sent through the registered post with acknowledged due. अर्थ कौन तुम जो रजिस्टर्ड पोस्ट कर प्रत्येक गवर्नमेंट जो देखी ठीक अच्छे तुम सपोज कौन जॉइन है आगे ठीक अच्छे अभी तो ऑनलाइन होगा आगे जो एडमिशन पे जाऊँ से सब स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर्ड पोस्ट दौलू जहाँद्वारा कौन अच्छी मु पठेली मोर पाखे प्रूफ रहा पाखे रिसीव भी मो पाखे प्रूफ रहा क्या वन्स ताके रिसीव कलापर मो पाक आसो कि कौन जे एति टाइम एति प्लेस रे ए कॉलेज रिसीव कर एप्लिकेशन बुझा पड़ा से जेहेतु कि गवर्नमेंट सेक्टर आसपंद अच्छी से पोस्ट ऑफिस भी कौन जे इंपोर्टेंस अच्छी कहीं सब लीगल एक्शन तुम पोस्ट ऑफिस बहुत भल काम कर ठीक अच्छे कहीं तुम जो प्राइवेट प्लेयर आसले भी कोरियर सब जहाँ पड़े आसले भी से सब कौन डेलीवरी ठीक अच्छे फूड डेलीवरी कि कौन जो पार्सल डेलीवरी यूज कर सब गवर्नमेंट सेक्टर पर आम कौन यूज कर पोस्टल यूज कर बिकज इट इज ए ट्रस्टेड वन डायरेक्शन इश्यूड बाय अथॉरिटी कौन डायरेक्शन इश्यू करियो भाव 10 लाख थिला 8 लाख 35,000 टका से कहउछन एबे डायरेक्शन दबो अथॉरिटी कौन करियो सब चेक करियो अथॉरिटी कौन करियो से गोट जगह बसिबे एम्प्लॉयर एडी आसंतु एम्प्लॉय एडी आसंतु कौन प्रॉब्लम है दी जन जार कथा सुन ठीक अच्छे कहीं ये तांकर राय देबे आंकर 10 लाख केमते कैलकुलेशन करते आंके जिंदी कैलकुलेशन करतले तांकर राय देबे आके केमते 8,35,000 करचंदी तांकर राय देबे ठीक अच्छे हला हो कि नहीं ए दीटा कैलकुलेशन तांके मैच कला पर डायरेक्शन देबे कौन देबे देखो ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर द रूल 10 द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इश्यू ए नोटिस इन फॉर्म GO calls upon the application as the employer before he may specify date, time and place. Specified date, time, place either by himself or through an authorized representative together with all relevant document and witness. If any person is declaring on behalf of his employee, the nominee of the legal head should be there for the providing a legal justice or providing a justification to the controlling authority stating the concerned amounts are correct or not. ले से जो अमाउंट आसो करेक्ट हुए ना से चेक करेंगे आफ्टर वेरीफाइंग दोज ऑल थिंग्स ही विल प्रोवाइड ए अवार्ड कौन देवे रे अवार्ड है कौन गिफ्ट टाइप ग्रेचुइटी अमाउंट देवे अवार्ड है गोटे प्राइज देवे है ठीक अच्छे कौन देवे जजमेंट देवे आम कह ओके नेक्स्ट पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी पावर कौन अच्छी enforcing the attendance of any person or examining him or oath, requiring discovery or production of document, receiving evidence or affidavit, or issue commission for examination of witness. ये चारिटा तांग बारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी पाखरे तांगर पावर अछि अपील केते दिन भीतर करियो तमे देखो 60 days का पे करियो दिन बुझ फर्स्ट रे एम्प्लॉयर यार देखो लिसन एम्प्लॉयर कहला कि मु आगे आपन देबी 8,35,000 एम्प्लॉय कहला नो 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 केते मिलियार अछि 10 लाख आंक दिन भितर डिस्प्यूट हला का पाखु गले कंट्रोलिंग अथॉरिटी पाखु गले कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोन दी जन जार कथा सुनले डिसीजन नेला परे एबे केते आसले जानचो 9 लाख टाका केते आसला 9 लाख आसला एम्प्लॉई खुशी हो कि नो 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 का पाखु जियार अछि अपील करियार अछि कोडी करियार अछि अपील करियार अछि कोडे हायर कोर्ट
ठीक अच्छे हायर कोर्ट तो अर्थ कौन कोर्ट को जीवार अच्छे है तापर से कोर्ट प्रोसीडिंग हम फास्ट सिविल कोर्ट हम तापर तुम कौन जे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जीव ठीक अच्छे लोकल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट तापर सुप्रीम कोर्ट तापर किसी कोर्ट ना इंडिया ओके बुझा पड़ा कनसेप्टा हाँ केमिति फ्लो होची देखो जिनसटा ओके देन के दिन इधर करिवो एनी पर्सन agreed by an order may within 60 days from the date of receipt of an order prefer an appropriate appeal to the appropriate government or such authority as may be prescribed by appropriate government एबे आछि कि appropriate government के जे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे तांको को लिखित आकार दिया हबो 60 डेज इतरे आफ्टर रिसीविंग ऑफ ऑर्डर बुझलो ए ऑर्डर टा की रिसीव कर ये ऑर्डर के देला तुमको कंट्रोलिंग अथॉरिटी देला के देला कंट्रोलिंग अथॉरिटी देला ताकू यू आर नॉट सैटिस्फाइड देन यू आर प्रोवाइडिंग एन अपील टू ताको होची एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तुमको कि सर देखंतु हमर जे कंट्रोलिंग अथॉरिटी से हम कथा सुनना एबे आपन कोन डिसीजन नंदु ठीक अछि वंस अपील हला परे द सेंट्रल गवर्नमेंट और द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट or the appellate authority may given the parties of appeal reasonable opportunity of being heard आके आथरे डाकिए थे चलो ठीक अछि दि जण डाकिए की के जण डाकिबे तीन जण डाकिबे एम्पेरियस हां एबे के तीन जण डिस्प्यूट अछि पर तीन अमाउंट पळे आसला देखो जणे कहला एम्प्लॉय केते कहला 10 लाख आगे मते मिलिबो ठीक अछि एम्प्लॉयर कहला केते 8 लाख 35,000 ए बाबू आसले किए आसला कंट्रोलिंग अथॉरिटी ठीक अछि कंट्रोलिंग अथॉरिटी आसले से केते कहले 9 लाख एबे ए तीन जण डका हो ठीक अछि एक ठीक अछि 2 3 तीन जण जागा ठिया हो एडे ओडे बेंच रे बस किए बसिबो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किए बसिए रे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बसिए पचारिए अच्छा को एम्प्लॉई तमर 10 लाख डा केमिति कैलकुलेशन होची से तांकर डाटा देबे आपण किन 8 लाख 35 होची से आंकर डाटा देबे आर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि जजमेंट तुम पास कलो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड काई की तांको रेस्पेक्ट दिया कोन दिया हबो रेस्पेक्ट दिया कैन और डेट बढ़ी उड़ी जिनसा बुझ कहीं जन डका हो कहीं ना आंके अथर ग्राउंड रूट खोजे से गोटे केस 2-3 वर्ष पड़े जोड़े रेफरेंस ऑफ इट सो दैट विल नॉट वेस्ट टाइम इन डिगिंग द रिसेंट केसेस अगेन देखो तापर कोन हबो being heard and confirm and modify and the reverse the decision of controlling authority कार authority decision करिवो controlling authority रे कोन कराला बापा you are deducted एबे मु जोडा कहि सेडा राइट ये appropriate government केडा appropriate government एबे appropriate government जोडा कहला सेडा हला ठीक on that basis recovery of gratuity एडी दिन सास करियो कोन आसीबो एठी तुमको सी चाहे बोले 11 लाख कहि पारे किंबा 8 लाख कहि पारे मु दीडा वर्ड दउ छला हबो जदि 11 लाख कहले रिकवरी का द्वारा हबो एम्प्लॉयर साइड बुझिला जदि 8 लाख कहले रिकवरी कार्ड हो एम्प्लॉई साइड अच्छा ये बुझा पड़ला हाँ कहीं जी जी जजमेंट करते ता बेसिस रो देखो से सेडा आगु कोन कहिछि बुझा पड़ला फ्लो चार्ट ओके हाँ मुझे फ्लो चार्ट कहबी मो से रेडी करछि ठीक अछि मे भी रुद्र सहित बसिक मो सेडा बने देबी बने देले सेडा तुम आराम से पढ़ गोट थर देखले जना पड़ ए विजुअल सपोर्ट सेम एग्जांपल जा मो सेड लिखिछि जदे मन रहबो हला तुम कोन दिन से देखियार अछि एवरी वीक फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आ कोन
ट्रू एंड फॉल्स आउ मोर फ्लो चार्ट हला एतिके देखिदेव जदि तुम पूरा मन रही गोटे गोटे एक्ट ओके आराम से मार्क ले आस चलो आप कौन हो तुम रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी मु जो कहली ये रिकवरी हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग ओके जो रिकवरी हम से कौन कहूँ Section 8 provides that if the amount of gratuity payable under this act is not paid by employer within the prescribed time, the person is entitled thereto. The controlling authority shall, an application made by in this regard on behalf of agreed person, issue a certificate the amount to the collector, who shall recover the same together with the amount compound interest at the rate of 9%. मन रखो एटा केते केते 9%. 10% को कैसे थिला जो लेट हो रिकवर तुम मिलला एडा केतळ एप्रिल पर एडा केते एप्रिल पर केते मिलिबो 9% की करबो एडा की करबो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो ऑर्डर दबो कलेक्टर रिकवरी कर काहे ना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल रे की पावर कार अधिक पावर अछि गवर्नमेंट रे जो अथॉरिटी ता ना कौन कहब कलेक्टर कह हला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रो मोस्ट वाइब्रेंट पावर थे टू रिकवर काना सी वंस प्रेशराइज करले जिति आगे जो पुलिस थिबे लोकल अथॉरिटी विल वर्क परफेक्ट ओके आई होप यू अंडरस्टूड सॉरी सो नाउ इट कम्स जदि बानिलानी जदि देलानी ता कोन पेनल्टी अछि काहे की केतना टाइम वेस्ट करा हला इथे 6 मंथ्स रो आउट कोन हला 60 डेज की 2 इयर्स लागि बारेडा हला काना केस हला फर्स्ट पर्सन कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेकंड पर्सन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आंकर जो टाइम टा वेस्ट करा हला सेति पहले पेनल्टीज दबो के दबो एम्प्लॉई दो एम्प्लॉयर दो काना एम्प्लॉयर पैसा दोनी एबे हेले कोन हो देखो सेक्शन 9(1) प्रोवाइड्स दैट whoever कौन दिजन एम्प्लॉयर किंबा एम्प्लॉई हला for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under the act or enabling any other person to avoid such payment knowingly makes or causes to be make any false statement or false representation shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may expense to 1000 or both. ता अर्थ कोन पेनल्टी तमर 6 months किंबा कोन जे 1000 rupees whichever is ठीक अछि whichever way or both based upon the crime or the judgment provided onto it. Section 9 provides that employer देखो फर्स्ट रा किए लिव हे पर सेकंड अकाउंट आछि एम्प्लॉयर खाली who contravenes and make default in complying any of the provision of this act providing on the punishable or imprisoned for the term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. Okay, so these are the provision. Exemption of employer for liability in cases. Exemption of employer from the liability in certain cases. इमिति केतरा केसेस अछि जोडी कि तमर कोन अछि एम्प्लॉयर को लायबिलिटी नाही exemption द कराइ को केसेस आगो section 10 provides that where an employee is charged with an offensive punishable under this act he shall be entitled upon complaint duty made by him and giving the complaint not less than 3 clear day notice in writing intention to do so and having the other person charges in actual offender brought before the court and the time of time of appointment for hearing of changes if the commission offense has been provided the employer proves to be satisfied of the court then he is not liable to pay. अर्थ कौन देखो गोटे एम्प्लॉयर प्रॉब्लम कर भांगी दीची चेक तापर जाइए रे केस लगा दीची कि सर मते ग्रेचुटी दउना मु 10 वर्ष काम करछि किंतु एम्प्लॉयर कोन करछि एम्प्लॉयर कोन करछि एठे फाइल गोटे कर देछि कोर्ट कि सर
ये जो मोर टेबल चेयर भांगी चंती सेते मु देई सेते कोन हबो exemption of employee from liability in certain case पळे आस की पावर दो छेडा section 10 repeat with me section 10 section 10 section 10 इमिति एमसीक्यू रे पळे आस पारे under which section the employer gets exemption from liability in the cases कौन कहबे तुम सेक्शन 10 ओके नेक्स्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कॉग्निशन ऑफ ऑफेंस ले कोन जे कि बहुत बड़ भूल है गोटेला मिस्टेक ऊपर बड़ भाई डाला कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हला बड़ मिस्टेक जदी करथु सेक्शन 11 प्रोवाइड्स नो कोर्ट shall take cognizance of any offense punishable under this act to say the complaint made under the authority of by the appropriate government where the amount of gratuity has not been paid or recovered within 6 months from the prescribed time. The appropriate government shall authorize the controlling authority to make a complaint against the employer whereupon the controlling authority shall within 15 days from the date of authorization make such complaint to the magistrate. हेलेटा कोन हिजो केस टा नहीं कोर्ट काई देखो यार देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दि जन जा लागिले गोटे अमाउंट बाहरला तापर तीन जन जा लागिले गोटे अमाउंट बाहरला तापर ए बाबू मिसले गोटे कोन जे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिसले ता गोटे केस लागिला हेले भी देलेनी हेले कोन करा कोर्ट को पळा कोर्ट मुंडो खाइकरी तमे तापरे सब जाके स्टडी से सब चलिकी रिकवरी हो ओके नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी ओके प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी section 13 provides that no gratuity under this shall be liable for an attachment or execution of decree of order of any civil or revenue or criminal code ठीक अछि no gratuity is payable under this shall be liable for the attachment in execution of any civil revenue or criminal code कौन जो प्रोटेक्शन तमर करा है ग्रेच्युटी ता अर्थ कौन रे सपोज मु कौन जे मिस्टर एक्स लोन नै अछि 10 लाख टका केतना लोन नै छन रे 10 लाख टका लोन नै छन से 8 लाख पेमेंट करछन केतना पेमेंट करछन 8 लाख पेमेंट आ 2 लाख टका पेमेंट करना आ केतना पेमेंट करना 2 लाख टका जति कोनोसी केस जति होउची ग्रेच्युटी के छुई पारी कोन होबो ग्रेच्युटी छुई पारी दरकार पड़ले तांको घर बिक्री कर ता गाड़ी बिक्री करी ता बैंक अकाउंट सीज करी पैसा रिकवरी कर परिबो को बैंक चाहिए किंतु ग्रेच्युटी को छुई परिबो एटा की पावर दीची सेक्शन 13 की पावर दीची सेक्शन 13 ओके सेक्शन 13 provides that notwithstanding anything contained in any judgment decree or order of any court for the period of commencing from 3rd April 1997 ending with the payment of gratuity act 2009 receive assent with the president the gratuity shall be payable to the employee in pursuance of notification by the government of India by the Ministry of Labour and Employment so dated that notwithstanding nothing considered in the second shall be extended or constructed or extended affect any person for the punishment or penalty whosoever by reason of non-employment by him of gratuity for a period specified in section shall become due in pursuance of said notification मुझे तुम कहि कोन कारण हले भी तुम ग्रेच्युटी छुई परिबो ना को कारण छुई परिबो जता ऑफिस रे कोनोसी मोरल टैप्यूट करछि केबा बंगारजा करछि से केस रे एनी अदर केसेस रे सेडा को लिंक करि के कर परिबो ना ओके नेक्स्ट चलो एबे जे हमें एमसीक्यू को ओके ठीक अछि एमसीक्यू स्टार्टिंग डा के कोइ परिबो which does not amount to retire कौन होबा retrenchment superannuation and ठीक अछि देखो retrenchment कौन होछि it is an amount of retirement resignation will be retirement dismissal also it is retirement because superannuation एमिति दिनसटा जोडा कि कोन तमरो at the time of particular contract or service ends ठीक अछि ए लिखि दियो साइड रे contract and ends or particular period of time in case of service it is 58 years in case of army it is 45 years ठीक अछि
next gratuity is payable, ठीक अछि, gratuity is payable on his superannuation, retrenchment, retirement or in any of the above. कौन होगा? All of the above. कहना gratuity तम superannuation हले, superannuation कौन? Particular contract end हो कि particular period of time रे, then retirement रे, then retrenchment cases रे, then all the above. हला हेता अर्थ कोन? ए तीनटा केस रे होउची, से पे हमर कोन होबो? All the above. Next, the gratuity payable to an employee shall not exceed, केते exceed होबनी, ठीक अछि. Gratuity is payable to an employee shall not exceed 20 months pay. कोन पिलाने? 20 months pay. ता अर्थ कोन? जेति की तार लास्ट जन पे होउची 20 months pay रो अधिका होबो. ओके, किमि दबन तुम जे कैलकुलेशन करिवो ता 20 months रो अधिका होबन. ओके, नेक्स्ट, employee shall display or an abstract of the act and the rule, ठीक अछि, rule under को फॉर्म अंडर देखेबो ओ नहीं तो the employer shall display an abstract of the act and rule in form number UUU. ओडा कौन पे? फॉर्म ओडा कौन पे? हेच टा कौन पे? एंड टा कौन पे? डायरेक्शन इश्यू ओ, डायरेक्शन इश्यू बाय कारो? competent authority. हेच हेच कौन अच्छी? Nomination. And N? Application for direction. ओके, ठीक अच्छे. फॉर्म ए है, फॉर्म ए ओपन पे, ओपन कोटा पे, हाँ, एस्टाब्लिशमेंट, ठीक अच्छे. ओपनिंग, चेंज और क्लोजर ऑफ एस्टाब्लिशमेंट. कौन रे भूल हो? ओपनिंग, चेंज और क्लोज. तुम करें एबीसी, क्लोज ऑफ एस्टाब्लिशमेंट. ऑलवेज मन रखते एमसीक्यू रे कोड आंसर राइट सेटा इंपोर्टेंट. आउ तीनटा काहे की आ कोड की लिंक अछि, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट. काहे ना जदी से पचारची इमिति हे पारे दे ए जो 4 नंबर क्वेश्चन ना नहीं सिमे टिक्की बुले दी पचार पारे. कोन बुले दी पचार पारे? द एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले एन, ठीक अछि, दिस द एम्प्लॉयर बाय इमिति पचार पारे which section, which form will be used for direction issued by the competent authority. ठीक अछि, फॉर्म यू, फॉर्म ओ, एच एन. अरे मु तो पढ़ी थिले एमसीक्यू रे कोन थिले यू थिले ना, यू बड. यूजुअली इट हैपेंस, यस और नो. सो दैट्स व्हाई सब जाक कोडा कोडी लिंक अछि हमको जानि फेर अछि. आउ एटा केमिति जानिबो? डिस्कशन रे जेतलो मुझे कौन जे 5-10 मिनट लेट होची, एट द टाइम यू नीड टू डिस्कस विथ ईच अदर. ओके, नेक्स्ट देखो, इफ sufficient cause is a sufficient cause of the appropriate government may condemn the delay of filing against the order of the controlling authority. कहते नहीं 60 days एबे पढ़ले. ओके, नेक्स्ट, nomination to be made by employee immediately on his appointment after completion of 1 year service. तुमको
after completing 1 year of service. Okay, next, which of this following is to be included in the definition of wages? Bro, तुम कहलो मा DNS allowances. ठीक अच्छी, अब वो हबनी कहीं हबनी, they are the other allowances. Okay, next, if an employer intend to close his business and the controlling authority केदिन तक करियर अछि, केदिन तक करियर अछि 60 days, केदिन तक करियर अछि 60 days. Okay, 60 days इतरे ताको इंटेंड फॉर क्लोजिंग करियर अछि. Okay, एडा को फॉर्म रे करियर अछि, फॉर्म सी एबा करथिले रे काहे भूलो छ रे, देख कहि ब्रा, ओपनिंग ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म ए, चेंज ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म बी, क्लोजर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म सी. ओके, नेक्स्ट, nomination to be filed कोड्रे डुप्लीकेट, गोटेला एम्प्लॉयर, गोटेला तमरा ना गोटेला तमरा एम्प्लॉयर पाक, आउ देला तमरा ईपीएफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ए जन को जणायार अछि नॉमिनेशन. ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस अमाउंट ऑफ नोटिस ता केमिति पठायार अछि, ऑलवेज नोटिस ता केमिति पठायार अछि, which will be not amount of notice, service of notice under the rule, personal service, by courier, by registered post, or both A and B. पोस्ट हेबा कथा बुझे, ठीक अछि. which will not amount to service of notice under the rule. by courier, personal service तो हेबा कथा नहीं, A and C हो, ठीक अछि. काहे कि ना सेटा जेबेले तुम रजिस्टर्ड पोस्ट पठार अछि, ऑलवेज जे कोन सर्विस हला, मे बी एटा और देखि देबा. ठीक अछि. नेक्स्ट, a person holding the post of an central government under the central government of an employee, payment of gratuity act. ठीक अछि, false, काहे false हबो, ठीक अछि. नेक्स्ट, कहीं ना एटा कोन थिला, एक्सक्लूजन थिला, मन पक एक्सक्लूजन थिला. ओके, नेक्स्ट, द फादर इन लॉ ऑफ एन फीमेल एम्प्लॉय विल बी कम अंडर फैमिली. ठीक अछि, ट्रू. आउ कि आसे फैमिली अंडर रे, ए लिखि दियो तमे, हस्बैंड. ठीक अछि, हस्बैंड, तापर आसला हस्बैंड रो पेरेंट्स. ठीक अछि, चिल्ड्रंस, तापर वाइफ रो पेरेंट्स. ठीक अछि, ए सब जासे फैमिली अंडर रे. नेक्स्ट, लेखो, the maternity leave granted for 90 days will be included for the calculation of continuous service. Yes, ठीक अछि. An employee is not required to obtain the insurance of liability for the payment of gratuity. ठीक अछि, false, काहे कि ताकु जिम्मेदारी नेबा पड़ियो, तार कोन जे इंश्योरेंस आल्सो नेबा पड़ियो. Employee may give a nomination to his friend for receiving gratuity after marriage. False, काहे ना after marriage किए बो वाइफ हो, वाइफ के मा हस्बैंड हला, एम्प्लॉय लेखि ना किए फोन छियो, हाँ कि नहीं रे. नो ग्रेचुटी शैल बी लायबल. ठीक अच्छे, नो ग्रेचुटी शैल बी लायबल ऑन डिक्री ऑफ कोर्ट. कौन एटा ट्रू. एबे जो कहानीटा कहिथिल तुमको, तांको कौन जे से 10 लाख ना लोन नहीं थिले, 8 लाख पेमेंट करछंती, आ 2 लाख कौन करछंती, 2 लाख कौन करछंती दे नाहांती. ओके, नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे पे द ग्रेचुटी टू ए माइनर, ए नॉमिनी. ठीक अच्छे, ए नॉमिनी on death of his employer. ठीक अछि, एटा कोन हिजबो, false. नॉमिनी केबे मिलिबो, सी तळ मेजर होबो. नॉमिनी केबे मिलिबो, जेतल से मेजर होबो ना.
माइनर गार्डियन को मिल पारे किंतु से पैसा काढ़ी खर्च कर परिबेनी जेपन ये माइनर मेजर नहीं ओके नेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ग्रेचुटी शैल बी 26 days ट्रू the employer can make an agreement with the employee to pay gratuity for the amount of fixed by the act false काहेकि gratuity will be based upon three things कौन कौन गोटे ला wage गोटे ला inflation गोटे ला pay commission ठीक अछि ता बेसिस रे next gratuity is a lump sum amount on a consideration for past service rendered by the employer true okay next the gratuity is payable on an employee after he rendered service of not less than 6 years 6 years kete varsh 5 years next the maximum amount of gratuity is payable kete hobo 20 lakhs एटा केबे पड़ला 7th पे कमीशन 7th पे कमीशन आगर केते थिला 10 lakhs सेटा भूल देछि ओके 20 lakhs हबो ओके next the employee shall arrange to pay gratuity within केदिन देता को देबार अछि 30 days then the appeal or against the order of controlling authority may be filed within केदिन थरे 60 days 60 days after receiving the order इपागरे ऊपरा करथले 60 days मनो छै नै next if the gratuity is not paid you need to pay 9% interest kete 9% interest kete 10% 9% kebe award hijibo kebe award hijibo hele side रे लिखि दबा in case of column ठीक अछि तमरो एप्रिल पर जदि तुम कौन से तुम मिलला पड़ को सेतल कते मिलिबो 9% मिलिबो नॉमिनेशन टू बी फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय इन फॉर्म नॉमिनेशन को फॉर्म रे एफ ना एच श्योर नॉमिनेशन एच लागो छी एफ लागो छी एच ना ना क्या देखिल फॉर्म एफ ना ओके और एच टा कौन पे अच्छा मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनी डा ना एच ओके हेले से एटा तुम कोन लिखि देबो एटा देखो एटा नॉमिनेशन लिखा छै ना एटा लिखि दियो मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनी एटा तो ठीक देखि करी तुम पेंसिल रे ये सब लिखिबो हला मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशन कहते एच आ नॉमिनेशन के सेक्शन नेक्स्ट ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड ठीक अछि on gratuity is calculated for every completed years of service or part in excess of 6 months at the rate of kono last drawn salary ठीक अछि so एटा केमते कैलकुलेशन हो 15/30 ना 15/26 okay 15/26 into last drawn salary next section 4a may exempt the employing dash or more person who is established and approved by gratuity fund ठीक अछि एटा 500 4a okay next rala employee within days within how many days it should be submit a fresh nomination within 90 days next if there is a dispute with the amount of gratuity payable to the employee shall deposit the amount with the gratuity with controlling authority and controlling authority can direct to pay that amount okay I hope you understood the gratuity and could able to answer it very well but to revise further
what we will do is we will take help of chart and past questions, 2 or 3 questions which have already came. Okay, that will help you. So thank you all for attending this class.